Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. From the platform of English Buffet 5, I warmly welcome you all, hoping that you are ready to receive another very valuable lesson. Yes, viewers, direct and indirect speech is going on by us, and definitely today we are going to wind it up by doing the last kind, that is interrogative sentences. So let's begin the lesson. Viewers, remember that we begin questions in multiple ways, but if we talk about narration, we write questions in two ways. एक type वो है जिसमें हम question start करते हैं with the help of some helping verb, और एक type वो है जिसमें directly हम किसी question word से अपने question का आगाज़ करते हैं. So the examples are, he said to me, "Are you in the city?" Again, look, it is beginning with an auxiliary verb, okay? But here on this side, we can see that this question is beginning with what? A question word. When are you coming back? So viewers, remember हमारे questions जो हैं वो दो तरह से begin होते हैं. या तो किसी helping verb से like do, does, did, is, am, are, was, were, will, shall, can, could, etc. Otherwise, they are beginning with some question word like when, what, why, how, where, right? So you have to consider these two once you start the conversion. Why? Because if there are two ways of beginning or writing a question, it means the conversion will be done in two ways as well. How? Let me tell you. Viewers, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर कंजंक्शंस, ईदर टू राइट इफ और वेदर. लेकिन अगर आपका सवाल किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो देर इज़ नो नीड टू चेंज. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी चेंज नहीं हम करते, उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड्स को भी हमने चेंज नहीं करना. नाउ लेट्स बिगिन द कन्वर्जन. एक बात यहाँ पे बताती चलूँ व्यूअर्स को कि बाकी तमाम चेंजिंग्स हमारी वैसे ही होंगी जैसे हम असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते आए हैं. और वो कौन सी चेंजिंग्स थी? वी नीड टू चेंज द प्रोनाउंस, वी नीड टू चेंज द टाइम एंड एडवर्ब, वर्ड्स, time and place adverbs, and what else we do? We change the tense, whatever it is. And here all the changings will be applied. हम उनको प्रैक्टिकली यहाँ पे भी इन्वॉल्व करेंगे. बस एक बात का ध्यान आपने रखना है कि योर डायरेक्ट स्पीच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. जब आप उसको कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं रहेगा. इट विल टर्न इनटू द शेप ऑफ, you can say, assertive sentence, right? So there should be a period at the end of the sentence. यहाँ पे full stop आना चाहिए. आपने हरगिज़ भी sign of interrogation नहीं लिखना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि इफ़ और व्हाट और व्हेन जब वहाँ पे लिखा जाता है तो दे गेट परप्लेक्स्ड considering that it's again a question, but it is not actually, right? So you have to write a period or a full stop at the end of the sentence. By changing it into indirect speech, it will no more be a question, right? Let's begin its conversion. She said to him, "Are you writing a poem?" She asked him if he was writing a poem. Why do we write here if? Because this question is beginning with a helping verb, right? Once you see helping verb, either you can write if or whether here, right? Secondly, we did the change of the second person. It's you. It should go according to the object of reporting speech. So it is him. We have to write its subjective case here. So we will be writing he. As this is present continuous, so we will be changing it into past continuous. That's it. If he was writing a poem. Is it looking like a question? Not at all. See the example at the end. I said to her, "Do you know this person?" Again, the question is beginning with what? A helping verb and auxiliary. So what we are required to do? Either to write if or whether, right? I inquired her. I said to her, I inquired her. Okay? Whether. Now, you is the second person. We have to change it according to her. That is the object. Okay? So, we will be writing here she. Do you know this question? This person. It means it's a simple present tense. So, we have to change it according to the simple past tense, right? So, which form of verb is required there? Second form, definitely. So, we'll be writing here whether she knew that person. This into that.
So these are the major changes that are required to do here in the conversion of interrogative sentences. Now, viewers, again, अगर आपको question word आ जाए, your question is beginning with a question word like what, when, why, where, how, etc. तब आपने क्या करना है, you need not to change the words. उनको आपने as it is लिखना है, लेकिन उनको लिखते हुए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सेंटेंस के एंड पे आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन अगेन दे दें. ओके, वो नहीं लिखना है, यहाँ पे फुल स्टॉप ही रहेगा. So he asked me, what are you reading? He wondered what I was reading. See, right after what, I have written subject. So यही काम आपने भी करना है. आपने हरगिज़ भी यहाँ पे auxiliary नहीं लिखनी. What was I reading अगर लिखेंगे तो you are wrong, right? Next one is, my friend asked, when did you see the new film? My friend asked me when I had seen the new film. You into, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. कल के लेसन में मैंने आपको ये भी बताया था कि if second person is given but there is no object in the reporting speech, then consider me there. Okay, so उसको me के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो फिर आप यहाँ पे हमेशा I लिखेंगे. देखें ये टेंस कौन सा था, इट वॉज सिंपल पास, तो इसको हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पास परफेक्ट में चेंज करना है. सो वील बी राइटिंग हियर हैड सीन द न्यू फिल्म, दैट्स इट. इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, वेयर को वेयर में ही रखेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग आई लिखेंगे और टू नाइट को दैट नाइट लिखेंगे, एंड दैट्स इट. See a few more examples, viewers. I said to him, when are you coming? I asked him when he was coming. Now you into him, he. Present continuous into past continuous. Next one, he said, where is my mother? He asked where his mother was. Okay, his. My is the first person. It should go according to the subject of reporting speech. So we'll be writing here his mother. My mother into his mother. And is MR should go into was were, and so on. You can see that in the first two questions, in the first two speeches, the question is beginning with the question word. That's why we need not to use any other, conjunction. There is no need to. Okay. Now in the third sentence, definitely we are in the need of writing a conjunction. Why? Because our question is starting directly with then auxiliary, that is will. That's why we'll be writing here whether. Right? I hope you are getting. Now let's recap today's lesson. Viewers, आज हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखने के दो अंदाज हैं. देयर आर टू मैनर्स टू राइट क्वेश्चंस, ईदर with the help of some helping verb, auxiliary verb, or with the help of some question word. And I gave you the examples in detail. सो इट डिपेंड्स. अब जैसा क्वेश्चन होगा, जिस अंदाज से वो बिगिन हो रहा होगा, उसी अंदाज से हमने उस पर रूल्स अप्लाई करने हैं. राइट? अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर हमने क्या करना है, इफ़ या वेदर में से कोई एक वर्ड लेना है एज अ कंजंक्शन और उसको लिखना है. सेकेंडली मैंने आपको बताया कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ बिगिनिंग विद सम क्वेश्चन वर्ड तो फिर हमने कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करना, बल्कि उसी वर्ड को एज अ कंजंक्शन लिखना है. राइट व्यूअर्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिस्कस्ड विद यू टुडे इज़ कि आपने क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्वेश्चन नहीं रहने देना. यू विल बी कन्वर्टिंग इट एज and writing it as assertive sentence, as declarative sentence, right? So what else you are required to do? The rest of the changings will remain same, means आपने pronouns को भी वैसे ही change करना है, आपने question को question नहीं रहने देना, tense को definitely change करना है, और इसके अलावा अगर time और place adverbs आ जाते हैं तो उनको भी आप change करेंगे. That's it. I hope you will like the video and you will be practicing over it. I have tried my level best to convey you the topic as smoothly as I could. So keep practicing. If you find any query, you can ask me anytime. Till the time, take care of yourself. Allah Hafiz.